चलो 4 दे देते आप ऑप्शन इस वाले को कट करो। फिर नाइट्रोजन देखो और फिर ठीक है। डी आंसर दो का नाइट्रोजन ठीक है। एसिड रेन का आपने चेक करता भाई एसिड रेन का ना नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड से और ओजोन से प्रोडक्शन which of the following are some important pollutants used by steel industry? सल्फर इसका मीनिंग ऑप्शन क्या था? ए आंसर है क्या कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। ये आंसर है क्या इसका? डी स्टील में चारों निकलते हैं ठीक है। which of the above cause acid rain देखो यार तो टू एंड थ्री साला जो व्यक्ति 2010 के पीएचडी को कर लेता वो व्यक्ति 2022 में ठीक नहीं कर देगा। और यूपीएससी ने बना बनाया दिया था ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि भाई की मतलब 2020 के बाद पैटर्न बदल गया कुछ नहीं बदला। अब जैसे स्टील से ये चारों निकल रहे हैं। स्टील से ये चारों निकल रहे हैं। सल्फर भी निकलता है नाइट्रोजन भी निकलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलते हैं डाइऑक्साइड भी निकलते हैं। इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन मल्टीपल गैस आर mentioned which can create confusion but we have to remember the basics. Sulfur and nitrogen are two famous acids, sulfuric acid and nitric acid. The basic region of acid rain. ठीक है तो नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड which together appear only option B ठीक है। acid rain formation formed by sulfur dioxide and nitrogen oxide reacting with water vapor and oxygen creating sulfuric and nitric acid। इसमें क्या होता है सल्फर एंड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड होती हैं ये वाटर वेपर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और नाइट्रिक एसिड एंड सल्फर एसिड बनाती हैं मेनली फ्रॉम फ्यूल कंबशन पावर प्लांट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज कोल बर्निंग ठीक है। कोल बर्निंग पावर प्लांट आर लार्जेस्ट सोर्स ऑफ SO2 व्हीकल सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट नाइट्रोजन ऑक्साइड ठीक है। environmental impact lower pH level of aquatic environment harming aquatic life damaging forests reducing nutrients availability increasing susceptibility to stressor देखते हैं impact on structure corridors impact on structure corridors limestone and marble building monument and statues leading cultural and economic loss mitigation technology solution include fuel gas desulfurization and low sulfur coal mitigation technology solution include fuel gas desulfurization फ्लू गैस इसके बारे में पढ़ेंगे भाई ठीक है। ओशियन एसिडिफिकेशन it decrease ocean pH level due to of absorption of excess atmospheric CO2 forming carbonic acid. In fact, reduce reduce calcium carbonate calcium carbonate calcium availability affecting coral reef reduce calcium carbonate carbonic acid बनता है
ocean acidification, CO2 को reduce calcium carbonate availability, coral reefs, shellfish, plankton, weaken marine food chain, disrupting ecosystem fisheries, lower oxygen level, exacerbating hypoponic hypopox condition. ये इसके बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है। Major affected region Arctic Ocean, North Pacific and Great Barrier Reef. Major Arctic Ocean, North Pacific and Great Barrier Reef. Eutrophication India is running out of phosphorus. Thus, the solution lie in our sewage. Excessive nutrient rich mainly nitrogen, phosphorus in water bodies leading to algal bloom and oxygen depletion. Diet, natural eutrophication, a slow and long-term process. Cultural eutrophication, accelerated by human activities, agriculture, sewage discharge and detergent. Process, nutrient influx, rapid algae growth, algal die-off, bacterial decomposition, oxygen depletion, hypoxia and anoxia. Consequences: hypoxia, dead zone, Gulf of Mexico, Baltic Sea, loss of diversity due to suffocation of aquatic life, increased harm, harmful algal bloom, producing toxins, pesticides, and cyanobacteria. Prevention and mitigation, nutrient management policy, photo, phosphate-free detergent, controlled fertilizer, detergent, phosphate, constructed wetland and buffer zone, excavation techniques to restore dissolved oxygen. एक bubble वाला पढ़ा था ना हमने, ठीक है, bubble वाला पढ़ा था। Fly ash, fine particulate residue from coal combustion into thermal power plants. Composition: silica, aluminum, iron oxide, heavy metal in, in trace amount. Environment: airborne PM 2.5 and PM 10 can cause respiratory diseases, leaching of toxic heavy metal into groundwater as found spill. 2009 Singrauli fly ash dam disaster. ठीक है। Utilization in Portland, Pozzolana cement manufacturing, mine dazzling, road embankment, brick zeolite production from wastewater treatment, regulation, fly ash utilization notification, 1999 amendment 2021 को 100% यूटिलाइजेशन टारगेट। हाई अल्कलाइन बाई प्रोडक्ट हाई अल्कलाइन बाई प्रोडक्ट बाय पेयर प्रोसेस by pair processing aluminum extraction from bauxite. Environmental hazard, high pH level, red mud, used in cement industry, iron recovery, geopolymer, soil neutralization after treatment, guidelines under hazardous waste management rule 2016, है ना, red mud spill, Hungary, cause high pH value, cause soil water contamination, toxic metal leaching, arsenic, cadmium, vanadium, Ajivka, Hungary, iocane byproduct of Bayer process, aluminum extraction from bauxite. ठीक है, ये हो गया। एक और कर लेता हूँ।
रिकॉल कर लेता हूँ। 76 हो जाएंगे, सॉरी 56 हो जाएंगे, 10 रखेंगे तक। ठीक है। R2 code of practice constitute a tool available for promoting the adaptation. R2 code of practice constitute tool available for promoting adaptation of environmental responsible practice, electrical, electronic, recycle industry, ecological waste management, wetland for international such as रामसर कन्वेंशन। रामसर वाला तो नहीं है, ये तो मुझे पता है। सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप डिग्रेडेड लैंड, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये आंसर है क्या इसका? ठीक है, ठीक है, ठीक है। India extended producer responsibility was introduced as an important feature which of the following: biomedical waste management, recycled plastic, manufacturing e-waste management, ये आंसर है क्या? ई-वेस्ट मैनेजमेंट 78 का बी। ठीक है। Due to improper, indiscriminate disposal of old and used of their parts, computer or their parts, which of the following are released in the environment? तरक्की हुआ था एकेडमी से बोला। ये आंसर है क्या? बी। 1 3 4 5 6 प्लूटोनियम, प्लूटोनियम पढ़ाई। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, प्रेफरेंस commonly known as reduce अरे भाई 3 यार। सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। R2 कोड practice frequency commonly reuse 3 R, reuse, reduce, recycle, can be eliminated। अच्छा, तो अब देखते हैं। Responsible recycling practice standard, sustainable electronics recycling manufacturing is a non-profit involved responsible recycling we use electronic products to develop R2 responsible recycling practice standard board of practice in 2008 ecological management wetland international importance and Ramsar site is known as WISE wetland for international WISE का सम्मान किससे है? R2 3 सस्टेनेबल क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। रेन फॉरेस्ट अलायंस सर्टिफिकेशन पर्पस टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस न्यू नेशनल सर्टिफिकेशन फॉर प्रोड्यूसर। ये एनवायरमेंटल नो डिफॉरेस्टेशन पोस्ट 2014 बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन। रेन वाटर अलायंस सर्टिफिकेशन कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया टू इंट्रोड्यूस न्यू नेशनल सर्टिफिकेशन फॉर प्रोड्यूसर पर्पस टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। की फीचर एनवायरमेंटल नो डिफॉरेस्टेशन पोस्ट 2014 बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। टोटल प्रोहिबिट चाइल्ड फोर्स लेबर फेयर वेजेस वर्कर राइट्स इकोनॉमिक मार्केट एक्सेस प्राइस मिनिमम फॉर सर्टिफाइड प्रोड्यूसर सर्टिफिकेशन प्रोसेस इंडिपेंडेंट ऑडिट GPS मैपिंग compliance with 2020 sustainable agriculture standard applied tea coffee cocoa banana palm oil timber ensure livelihood for 2.3 million plus farmers। Science based target initiative India ranked 6th globally with 127 companies committed to net zero target। Science based target initiative funded by 2015 initiative CDP UN Global Compact। UN Global Compact WRI WWF World Wildlife Federation।
Purpose to help companies set up Paris Agreement aligned emission reduction target. Key feature: corporate net zero standard. Key corporate net zero standard near term to 5 to 10 year, long term target to limit to 1.5 degrees Celsius. Sector specific guidance: apparel, aviation, chemical, finance, etc. Impact: 10,000 plus companies committed, 12,000 plus with validated net zero target. Global Reporting Initiative. Global Reporting Initiative is ESG, Economic Social Governance, here to study. Global Reporting Initiative founded in 1997. Purpose to set global standard for sustainable reporting. GRI standard cover economic, environmental and social framework aligned with UN SDGs and EU CSRD, ISSB, Universal Standard, GRI 123. Sector specific: mining, oil, gas. Topic specific: climate, labor, water use. Impact: used by almost 80% of world top 250 companies. Leaf: lowering emission by accelerating forest finance. Coalition: down to earth. Leaf Coalition launched April 22, 2021, Norway, UK, USA. Purpose 1 billion plus fund to fight tropical deforestation. Feature: RED plus finance mechanism. RED plus finance mechanism pay tropical countries for verified emission reduction. Verification standard. ART trees architects for real RED transition. Ensure transparency. Public-private partnership. Government firm buy carbon credit. Government and firm buy from forest conservation projects. Impact: $1 billion plus mobilize million of hectare project. ठीक है, आगे भी देखते हैं. ये लास्ट टेस्ट के बाद बैक हो जाऊँगा मैं पूरा. उसके बाद जो भी सही तरीके से उससे देख लूँगा, फिर उससे मेहनत करूँगा. Why there is a concern about copper smelting plant? Why there is a concern about copper smelting plant? They may release lethal quantity of carbon monoxide. Lethal quantity of carbon monoxide नहीं, lethal हटा दो ये. They may release pollutant, ये तो निकलेगा ही. The copper slag can use leaching heavy metal into environment. 2 and 3 B answer है. Which of the following are some important pollutant released by steel industries? 1, 2, 3, 4. D. Which of the above are reflected into atmosphere due to burning of crop biomass residue? Sulfur dioxide, carbon, methane. ठीक है, मीथेन. अगर मीथेन को हटाओ, कार्बन मोनोऑक्साइड. डी अंदर है. देखो, जो बायोमास जलाते हैं उससे सब निकलता है. कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, मीथेन भी निकलता है, ओजोन भी निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है. देखो, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व आवर कॉमन नॉलेज. द वर्ड यूज lethal statement 1 is the extreme and likely to be wrong. Copper is excreted from process of smelting. If it would be release lethal amount of CO2, carbon monoxide, it would have taken too many lives till now. Thus eliminate statement 1. We can get right answer B. ठीक है,
In copper smelting process, first the carbon combust with oxygen. Combust with oxygen in the air to produce carbon monoxide. Then C2 react with other ore releasing carbon dioxide. Lethal quantity of CO is not released into environment. Slag containing high concentration of heavy metal, lead, cadmium, nickel, arsenic, which can be released into environment cause contamination of soil, surface water and groundwater. Air pollutants such as hydrogen fluoride, sulfur fluoride, oxide of nitrogen also emitted. ठीक है हाइड्रोजन फ्लोराइड निकलते हैं, सल्फर फ्लोराइड निकलते हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन निकलते हैं. सीमेंट इंडस्ट्रीज एंड इट्स कार्बन and environmental footprint. Cement industry is crucial for infrastructure development but is a significant contributor to global CO2 emission. सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में पीछे पढ़ा था हमने, जिसकी जगह कुछ यूज़ कर सकते हैं हम. अभी देखेंगे हम, जब पूरा पढ़ लेंगे ना जब मज़ा आएगा. कार्बन फुटप्रिंट. CO2 emission. Cement production account for approximately 8% of global CO2 emission source. कैलकुलेशन. क्लिंकर प्रोसेस होता है इनमें प्रोसेस होता है क्लिंकर. एमिशन सोर्स क्लिंकर प्रोसेस. डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट इनटू लाइम कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2. नहीं, contribute about 50% of emission. Fuel combustion, burning fuel to heat kills account approximately 40% of emission. देखते हैं, समझ में नहीं आया ये समझ में नहीं आया बस. environmental impact. Resource exploitation. Mining of raw material like limestone can lead habitat destruction and biodiversity loss. Air pollution. Emission to particulate matter, nitrogen oxide, sulfur oxide can degrade air quality. nitrogen oxide निकलता है, sulfur oxide निकलता है. Water usage. Cement production is water extensive, potentially leading to water scarcity in arid region. Mitigation strategies. Alternative fuel. Using waste drive fuel to reduce reliance on fossil fuel. Clinker substitution. Replacing a portion of clinker with supplementary material like flying ash or slag to lower CO2 emission. Carbon capture storage. Implementing CCS technology to capture CO2 emission from cement plant. Pharmaceutical waste and antibiotic resistance in water bodies. Improper disposal of pharmaceutical waste can lead to contamination of water bodies, contributing to the development of antibiotic resistance bacteria. Sources of contamination. Manufacturing effluent. Discharge from pharmaceutical plant containing active pharmaceutical integrant. Healthcare facilities. Hospital and clinic release waste from unmetabolized drugs. Domestic wastewater, human excretion and unmetabolized antibiotic and proper disposal of medication. Impact. Selective pressure. Presence of antibiotics in water bodies. Expert selective pressure promoting the survival of resistant bacteria. Gene transfer. The resistant bacteria can transfer gene into other bacteria, spread antimicrobial resistance. Mitigation strategies. Wastewater treatment. Implementing advanced treatment process to remove pharmaceutical contaminant. Regulation. To enforcing stringent guidelines for pharmaceutical waste disposal. Public awareness. Educating the public on proper medication and disposal method. Regulation. Enforcing stringent guidelines for pharmaceutical waste disposal. Wastewater treatment. Implementing advanced wastewater process to remove pharmaceutical contaminants. ठीक है, ये हो गया 67. ये क्या है फ्रेंड्स.